नेक्स्ट टॉपिक रिएजेंट्स। क्वेश्चन आता है रिएजेंट्स किससे कहते हैं। देखें, द स्पीसीज विच हैज ग्रेटर एनर्जी टेक द एग्रेसिव रोल इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज कॉल्ड रिएजेंट। पुनः सुन लें, द ग्रेटर एनर्जी स्पीसीज विच इज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज क्या है, द ग्रेटर एनर्जी स्पीसीज विच इज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, शॉर्ट में हो जाती है। इन ए रिएक्शन बिटवीन एन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिएक्शन it is considered that the organic molecules is the substrate and the inorganic molecules is the reagent। जो कि आपको एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है, आर एक्स सबस्ट्रेट प्लस एन ओ एच रिएजेंट्स, आर ओ एच प्लस एन ए एक्स। इन a reaction between two organic molecules it is difficult to specify the reagent and the substrate। ordinary whoever the one with full below charge is more reactive and may be considered as the reaction। Rx substrate, C2H5ONA, sodium ethoxides reagents। Ethoxides is the reagent is the reaction in the reaction। The reagents are two types. First, the one which attack the positive side in the molecules is called the nucleophilic or nucleophilic reagent, and second, the one which attacks the negative side in the molecule is called the electrophile or electrophilic reagents। other third, free radical। next topic, electrophilic reagents। a species which can accept a pair of electron is called an electrophilic reagent। it may be positively charged ion or electron deficient molecules। a positive charge ions H plus, X plus, NO2 plus, SO3H plus, C6H5N2 plus, R3C plus, etc. R dash etc. Electron deficient molecules VF3ALX3 SO3 CO2 ICL SNCl2 FeCl3 AlCl3 etc. Nucleophilic reagents, a species which can donate an unshared electron pair nucleophilic is called nucleophilic reagents। जिसके यार लुईस बेस होते हैं। इट मे बी नेगेटिवली चार्ज आयन और ए मॉलिक्यूल हैविंग एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ए देखें, नेगेटिव चार्ज आयंस H माइनस, OH माइनस, RO माइनस, RS माइनस, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, RC डबल बॉन्ड O माइनस, NH2 माइनस, CH माइनस, CH CH माइनस COR etc। इलेक्ट्रॉन
COR का ये होल ट्वाइस होगा, CH माइनस COR का होल ट्वाइस। बेटी पेन दे देना। B, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स H2O, ROH, RNH2, NH3, MgBr, RLI, etc. Next, free radical. A neutral species which have the unpaired electron 1 अथवा more, it is called free radical. Activation energy, next topic, activation energy. Without the supply of extra amount of energy, the collision between the reactant is not sufficient to result in the products. So, the minimum amount of energy which must be supplied to requirement the collision for a reaction to occur is called as the energy of activation. जिसे कहते हैं अपन शॉर्ट में ESCT, is essential for most reaction. Next topic, transition state. The higher energy state of in the reaction when bond breaking and making simultaneous, the reaction consequently change their geometry under the stress and strain of the reaction condition and pass through an optimum state when the effective collision has been achieved. This state in the course of reaction is called the transition state. So called because the reaction change from one form to another after this state. So diagram, see diagram, आप देख रहे हैं डायग्राम में किस किस के मध्य डायग्राम है, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, देन reactant convert to transition state. So transition state and reactant intermediate, reactant and transition state between difference of energy called activation energy and state transition state convert to product. Progress of reaction, endothermic reaction देखो, progress of reaction and potential energy between diagrams, the reactant transition state convert to product. Between transition state and reactant energy difference called activation energy and product and reactant energy difference is plus del H enthalpy. अपन शो करते हैं. अदर ग्राफ भी आप बना सकते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.